your skills in terms of the technology, such as you learn in that Android, Flutter, TensorFlow, Google Cloud, and all these technologies. And also the second point is networking and career opportunity. So the Google invites you to get hands-on experience in the various fields, such as organized as Google Developer Student Clubs. In that, the networking, such as you can come the campus and visiting the actual development which are going on the Google in the various fields, such as developing the Android, how the exactly the cloud field work behind the scene which you use, then the accessing the resources. The Google provide in this program, the Google provides you the completely free resources related to the Android, Flutter, TensorFlow, and all this stuff, which is you can use in your final year project and also solving the society problems which you are seeing. So please show the first video. So this one is one video which you can see. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technology. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Okay, so in this video you see the complete development journey and the procedure which you can apply as a GDSC lead. So first time I applied as a GDSC lead for establish this great community in your college. So this process are entirely they are saying first you go the platform and see the skills which you know, and after that applying that as a GDSC lead, there is a one interview process which is organized by the Google. You can crack that interview, get one test, solve that test, and getting the GDSC in your college as a GDSC lead. So next slide please. So this is our first program which I can conduct in my journey, which is the Google Cloud Study Jam. As its name suggests that it is related to the Google Cloud. So in this program, I get more than 160 plus entries in our college to get hands-on experience regarding the Google Cloud, solving the problems and finding the solution using the Google Cloud. So the Google Cloud is mostly used for hosting your website, models, and all the things regarding your development career, which you can show the peoples, such as when you get any URL, hit any URL, such as ssgmc.ac.in. So in that page, you see the Ssgmce website, right? These websites are hosted on any cloud server. So same type of this, Google Cloud is a cloud serving platform which you can utilize according to your need to host your website, products, uh, and so on. So this event are help you to understand regarding the concept of Google Cloud in various fields such as a VM instance, Kubernetes, cluster, on all these stuff. So behind that, the Google give the various batches to the student who's completed the complete course successfully, and also the swags and goodies which you can showcase to your peers to peer. Next slide. So this is pictures when I can conduct that event in our labs. So this is a complete analysis. So you can show the
all three milestones we can achieve in that first event. Next slide, please. So the second event is related to Google Solution Challenge. So mostly the Google Solution Challenge is a global solution challenge. We can say that in that there is a 17 sustainable goals established by the United Nations, in which you can use any one of them to solve their problems. Find their problems in that particular sector, uh, and solve them by using your engineering background or engineering technology, and use the Google product in that. So the 70 sustainable goals are related to the so morely oriented to the society problems, such as no hunger, then fresh water problem, like that. So for that, first time in our college, there are four teams are selected as a Google Solution Challenge team, which are invited as a Indian regional boot camp in a T Hub, which is the world largest incubation center in Hyderabad. In that, all the teams are going to see what is the exactly the Google can provide you to get the solution of that particular problem. Next slide. So this is a picture regarding that solution challenge. You can see that welcome to the world largest innovations campus. This is the Google Solution Challenge Indian Regional Bootcamp, like that. So in that Google give the mentors to you to analyze your problem which you are solved in that particular 17 sustainable goals, and also you get you the idea regarding the all the mentorship, such as if you are facing any problem to build any component in your project, so they guide you to what is the exact way to develop that component, which technology or which tool you can use in that particular development process to make your project more effective, complete it within the timeline, and solve the community problem. Next slide, please. And moving forward, third event is GenAI Study Jam. The name also suggests that it is related to the generative AI. So now you are all of them are using the ChatGPT, Gemini, Mistral, Cloud AI, right? So this event are also help you to understand what is the generative AI behind that scene, when you user can ask any prompt to the ChatGPT, and what ChatGPT process that particular prompt and give it back to you the response which you are required for that particular prompt. Suppose you write any program regarding the give me the write a program in a Python for finding the prime numbers. So behind the scene, the ChatGPT know which model, which tool they are used to generate the particular code in your required programming language. Suppose you get the Python, right? So they analyze. You ask about the Python. They not give you the Java solution, right? So they analyze the Python and give you the complete step-by-step instruction to get that code, how you can execute it, how to get the answer behind getting that prompt. Next slide. So this is also the analysis which you can see the when I conduct the events for helping the student, how you can exactly solve the labs which are provided by the Google related to generative AI. Then this is a complete the milestone. See the names of them to complete all of this, and then below that there is a swag distribution which are provided by the Google to complete all the students who are completed all the badges. The Google can provide the goodies for them to acknowledge their achievement. Next slide. So next workshop which conducted in GDSC regarding to the AIML and the Android. Both of them are the Google products. Android is the most of them, and the AIML related to the Gemini. So this workshop is mostly focused on the development, the models, fine tuning it, and building the solution, and also regarding to the skills which you use in the AML session. Suppose in your any project which you require to when I something add regarding to the AI. So what exactly the steps, first steps you need to understand regarding the AI, how you can use it in your project. So this time, all this stuff are covered in a AIML session. And Android also the mostly focus on the Kotlin language,
because the Google are found the Kotlin language mostly in Android field. So in that there is a app, build one app regarding to the e-commerce website to showcase how exactly the Android apps is work in a Kotlin language and get in the output. Next. So this is again the sample of the events which conducted by the regarding the AML and the Android. Next slide, please. So then this 4 to 5 events and workshop, the entire journey is completed. Now the all the GDSC leads in all over the India are invited as a GDSC India Lead AI Day at a Google campus which is located at Bangalore. In that the Google are so now you can play the second video. So in second video you can show the complete journey regarding in Indian GDSC platform. Google Developer Student Clubs (GDSCs) are community groups for college, university students interested in Google developer technologies. Through this program, Google supports passionate leaders at their universities who are dedicated in helping their peers learn, solve problems for the community, and provide opportunities to network. Currently, there are more than 500 GDSC leads in India across 26 states in 200 cities. By joining Google Developer Student Clubs, students expand their knowledge on Google technologies, engage in a peer-to-peer learning environment, and build solutions for local businesses and their communities. We, as a program team, curate the latest content on various Google technologies like Android, Google Cloud, TensorFlow, Web, and Flutter to help bridge the gap between academia and industry. The journey of learning continues, with students implementing theory into practice by building projects and participating in hackathons. Students also get an opportunity to participate in global competition like Solutions Challenge. Solutions Challenge is an annual competition that invites university students to develop solutions for real-world problems using one or more of Google products or platforms. Together with the efforts of GDSC leads, the program not only impacts the lives of millions of students, but also helps the leads flourish in their own professional journeys. As a GDSC lead of my campus, I participated in the Android campaign that was designed for us exclusively as a part of the GDSC program. Along with me, hundreds of students on my campus learned the basics of Android app development. We enjoyed the Code Labs contents that was specially curated for us as a part of the campaign. While learning how to build an app, one day we thought how easy it would be for our faculties if they could track the attendance for a class in their mobile phones and easily maintain the records of the college students on tip of their fingers. Together with my team, we started working to come up with a solution for the same. We designed a few app screens and a simple prototype. Later, we started implementing our ideas into code, which turned into a beautiful Android app that was launched on the Google Play Store. Currently, the app has more than 500 downloads. I'm proud to be part of the Google Developer Student Clubs community as a lead and thankful for all the initiative and campaigns they planned for us. My journey with the GDSC program began when I joined the club at my campus as a member. I was able to benefit from learning with my peers and solving local problems around me right from the first year. This motivated me to apply for the position of GDSC lead at my campus. I was finally selected after a rigorous application procedure, and the journey from there was definitely a roller coaster ride with tons of learnings. It helped me transform into a better version of myself, and I was able to explore multiple areas that I had never worked with before. It allowed me to improve my leadership, teach technical concepts to my peers, improve management and networking skills, along with working on different areas like marketing, sponsorship, design, event management, and planning. Today, I'm working with Google as a software engineer. I'm grateful for my journey as a Google Developer Students Club lead and the impact it had on my career progression. All of these achievements are overwhelming to see.
From huge campaigns like Google Cloud Career Practitioners Pathway, where hundreds of students publish their projects using Google Cloud services, to Compose Camps, where hundreds of students develop apps using Jetpack Compose, we are elated with the contributions by the GDSC leads, their core team, and club members. Not only that, we also saw massive response to Clutter festivals, where many started their journey to contributing to open source, which were then featured on the Dev Library platform. The students continued their learning journey with machine learning, Firebase, and web as a part of the GDSC program. After putting in a lot of hard work in building a strong developer community on campus and keeping their communities active, the GDSC leads were invited to a graduation event to celebrate their successful journey. The graduation event was well deserved by all the GDSC leads who were part of the carnival parade planned for their farewell. As we look forward to continuing this journey, we are excited to nurture the next class of GDSC leads and can't wait to see how they elevate the student developer community. Are you inspired to lead and join such a vibrant community of student developers? Are you passionate about solving real world problems using technology? Explore the link below to immerse yourself in the world of technology, participate in annual solution challenge, and build great connections with student developers across the globe. So now I hope you can clearly understand what is the GDSC. Next slide. So thank you everyone. Thank you, Saurabh. Now I request Amit to throw some light on the topic which is given to him. So I invite Amit on the stage. Thank you, sir. Good afternoon, guys. आवाज कमी झाला, एनर्जी कमी झाली आहे. गुड आफ्टरनून. नाही आला आवाज. गुड आफ्टरनून. So I am Amit Modke, currently working at Bristolcon, a Mahindra Group company as a SAP associate, and my subdomain is AWS Cloud. So anybody know AWS Cloud here? AWS Cloud before here? In recent sessions are going through the topic like SAP. They are talking about the Bristolcon company. You all are here? सुना है ना, सर ने बोला था ना अभी एसएपी के बारे में. Before start the session, I would like to extend thanks to the social media team for organizing this orientation, and to all the technical team and the cameramen who has continuously recording and live telecasting these sessions and orientation. Because yesterday I also watched this your orientation session at my company. So thank you to all the team. Please guys, once big round of applause to all the team members. आपका सेशन ओवर होने के बाद भी ये लोग कैबिन में जाके काम करते, वीडियोस बनाने पड़ते. अगर आप लोगों ने पोस्ट वगैरह देखे होंगे तो रात में भी पोस्ट आते हैं. देखा है क्या कभी? फॉलो कर रहे हो ना इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सारे प्लेटफॉर्म को कर रहे हो कि नहीं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. Next. AWS question mark. Anybody know what is AWS? सुना है किसी ने इसके पहले? सुना तो होगा नाम. कोई नहीं बोल रहे होंगे क्या बोलते हो सर, अभी तक हमने तो हाइब्रिडाइजेशन SP1 है, SP2 है, SP है.
रेजोनेंस बॉन्ड पढ़े, बनाना बॉन्ड पढ़े, सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, फ्रिक्शन पढ़ा है। अभी AWS कहाँ से आ गया, है ना? सुना है नाम किसी ने AWS? Okay. So before starting the AWS, we have to analyze the some concept of the cloud computing, because from cloud computing the AWS terminology has been introduced. Okay, so next slide. What is cloud computing? मैक्सिमम लोगों ने PUBG खेला होगा, खेला है? अब देखो कैसे एनर्जी जाग गई। खेला है PUBG? वॉइस आवाज कम आ रहा है, अरे बोलो हाँ। कौन सा सर्वर है PUBG का? कौन से कंट्री ने होस्ट किया हुआ है? पता है या सिर्फ खेल रहे हो? कोरिया है क्या? कौन सी कंट्री है? ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आप लोग सारे इंडिया से खेल रहे हो PUBG, ठीक है? कोई भी कंट्री होंगी XYZ, उन्होंने होस्ट किया हुआ गेम है, पर फिर भी आप इंडिया में से एक्सेस कर पा रहे हो। कर रहे हो कि नहीं? कर पा रहे हो ना? सो इन सिंपल वर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग यही है कि रिमोटली आप कहाँ से भी कोई भी चीजें एक्सेस कर पा रहे हो सर्वर से। आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं कि एकांत चीज चाहिए तो उस लोकेशन पे जाए और उसको एक्सेस कर पाए। You can access anything, any information from internet remotely. In simple words, that's the cloud computing. Best example is PUBG. Okay, next. Why AWS cloud is required? There are the many cloud platforms, and during the cloud computing, why people are using the cloud? क्वेश्चन तो पढ़ता होगा ना कि क्लाउड क्यों इतना मार्केट में चालू है। बिफोर यू आर टेकिंग द एडमिशन इन इंजीनियरिंग, यू आइडेंटिफाई विच टेक्नोलॉजी इज ट्रेंडिंग। सर्च किया था क्या? सिर्फ एडमिशन लेके आए हो? किया था क्या सर्च? क्लाउड, SAP, सेल्सफोर्स नाम सुने होंगे आपने। जो IT बैकग्राउंड से CS के लिए एडमिशन लिए उन्होंने तो सुने होंगे ऑलमोस्ट। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, AWS क्लाउड। इफ यू आर विजिटेड अवर कॉलेज IT डिपार्टमेंट वेबटेक लैब, यू हैव ऑब्जर्व दैट वन डेटा सेंटर। विजिट किया है क्या? यू हैव ऑब्जर्व दैट वन डेटा सेंटर। इन डेटा सेंटर देयर आर वेरियस सर्वर्स, दैट इज अ सर्वर। उसमें बहुत सारे आपको वायर्स लगे हुए दिखेंगे, नेटवर्किंग रहता है वो सारा। देखा है आपने लैब्स या दूसरी जगह कहीं पे जाके? पहले क्या होता था, किसी को अगर कंपनी स्टार्ट करनी रही या कोई भी स्टार्टअप हो या किसी भी चीज का डेटा स्टोर करने की जरूरत रही तो खुद का तो स्टार्टअप डालना ही पड़ता था, बट वहां पे उसको खुद का एक डेटा सेंटर डालना पड़ता था फॉर स्टोरिंग द डेटा। सो इट्स रिक्वायर ऑल द डेटा एट देयर स्टोरेज। अगर कभी भी डेटा की जरूरत पड़ रही तो उस स्टोरेज का यूज करके वो डेटा कभी भी एक्सेस कर सकता है। बट नाउ सिनेरियो चेंजेस, जब से क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आया हुआ है, आपको US में भी फैक्ट्री डालनी है तो आपका डेटा सेंटर इंडिया में भी रहा तो भी चलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग ने इजी करके दिया हुआ है, इसलिए अभी मैक्सिमम स्टार्टअप जो आ रहे हुए उनका क्लाउड जो है AWS क्लाउड है। आपने सुना होगा कि इस कंपनी की वेबसाइट क्लाउड पे होस्ट है, सुना है ऐसा? सुना है क्या? मैक्सिमम कंपनी होस्टेड देयर वेबसाइट्स ऑन AWS क्लाउड। ऐसा भी सुना होगा कि कोई कंपनी US से काम कर रही है और उसका डेटा सेंटर इंडिया में है, इंडिया की कंपनी का डेटा सेंटर US में है। ये तो ज्यादा दूर का हो गया, अपने संस्थान का ही एग्जांपल ले लो। हैविंग अ डेटा सेंटर एंड अवर ओन कॉलेज प्रीमाइसेस, पता है नहीं? कॉलेज कैंपस में डेटा सेंटर होके भी सारे जगह के जितने भी जगह संस्थान का जो भी ब्रांचेस है सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। सो दैट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, नेक्स्ट। There are the two big scenarios why cloud computing comes into a market. दो बिग रीजंस है।
एक तो पहला स्टार्टअप, जो आपको बोला कि मैक्सिमम कंपनी को जब स्टार्टअप डालना पड़ता था उसको पहला रीजन लगता था कि उसको खुद का डेटा सेंटर बनाना पड़ता था। डेटा सेंटर बनाने के लिए उसको स्टोरेज लगती थी, मतलब एम्प्टी रूम लगती थी पूरा, उसको पूरा मैनेज करो, टेम्परेचर भी मैनेज करो, पूरा डेटा सेंटर मैनेज करने के लिए दे रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज, विदाउट एम्प्लॉयज ही कैन नॉट मैनेज देयर डेटा सेंटर। सो ये चीजें पहले थी, बट नाउ द क्लाउड कम इनटू अ मार्केट, अभी खुद का डेटा सेंटर लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंपनी डालनी है तो आप AWS का डेटा सेंटर परचेस कर सकते हो और उसके ऊपर आपकी कंपनी की वेबसाइट या जो भी चीजें वो होस्ट कर सकते हो या फिर डेटा स्टोर कर सकते हो। सो बिग रीजन इज स्टार्टअप्स, उसके वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग ज्यादा मार्केट में आ चुका है। एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं सामने, वोडाफोन, नैप, कॉमकैश, शार्प, सैमसंग, यूनिलीवर, सुना होंगे नाम, तोशिबा, सारे AWS क्लाउड यूज करते हैं। I listed some of the companies only. There are the various companies who are using their AWS cloud. Okay, next one. Okay, जाना पहचाना सा लग रहा है, देखा है कहीं, क्या है? Amazon, फ्लिपकार्ट के सेल आते हैं, पता है सबको? पता है? बिग बिलियन सेल और Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं ये दो सेल जब चलते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांजैक्शन रहते हैं इनके। ठीक है, तब इस सिनेरियो में क्या होता है कि उनके पास कस्टमर बहुत सारे रहते हैं, तो वेबसाइट जब होस्ट रहती है, ऐसा नहीं है कि Amazon ई कॉमर्स साइट है तो अपने को साइट से ही प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे। अगर एट अ टाइम इतने पीपल अगर उससे लॉग इन कर पाएंगे तो साइट क्रैश हो सकती है या डाउन हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है। अपन बहुत बार टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि सर्वर डाउन हो रहा है, किया होगा ना यूज, सर्वर क्रैश होता है, बहुत बार लोग बोलते हैं ऐसा, सुना है ना? ये मैक्सिमम टाइम ऐसे सिचुएशन होती है। बट Amazon का और फ्लिपकार्ट का जो सेल होता है उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि उनको जितनी स्पेस चाहिए वो Amazon क्लाउड से खरीद लेते हैं। अगर उनका 2 ही दिन का बिग बिलियन सेल या फिर जो भी कोई मार्केट में सेल आ रहा होगा उनका 2 ही दिन का रहा, तो उनको जरूरत नहीं कि वो साल भर तक परचेस करके रखे, अननेसेसरी परचेस करके रखी तो ज्यादा कॉस्ट जाएंगी। ठीक है, क्लाउड का यही सिंपल टर्म है, पे एज यू गो। आप जितना यूज कर रहे हो, जितने दिन के लिए यूज कर रहे हो, जितना स्टोरेज यूज कर रहे हो, आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। अननेसरी आप एक रूम बना के रखेंगे, जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट ने अगर सोचा कि हम भी एक रूम बना के रखेंगे, उसमें सर्वर डेटा सेंटर वगैरह बना के रखेंगे, और जब बिग बिलियन सेल 2 दिन के लिए आएगा, साल भर का वो खर्चा ये कर रहे, एम्प्लॉयज का खर्चा, रूम का खर्चा, सर्वर का खर्चा, बाकी मेंटेनेंस का खर्चा, तो उससे बेटर है क्लाउड का यूज करें। सो दे ऑल बोथ द कंपनीज यूजिंग द क्लाउड, AWS क्लाउड। जब उनका बिग बिलियन सेल और जो भी कोई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है उस टाइम पे वो क्या करते हैं, इनका क्लाउड यूज करते हैं, मैक्सिमम यूजर्स उससे लॉग इन करते हैं, जो भी डेटा होता है या फिर यूजर्स की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल्स आपकी वो सारी क्लाउड पे स्टोर रहती है। अगर ऐसा हुआ कि 100 यूजर का उन्होंने स्टोरेज लेके रखा हुआ है और 101 यूजर लॉग इन कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा होगा कि वो दुकान में जाएंगे परचेस करके लाएंगे कि रुको 100 के ऊपर यूजर्स गया, हमको थोड़ी बार स्टोरेज चाहिए, नेवर। आपने Amazon को कमांड दे दी कि हमको थोड़ा बार स्टोरेज चाहिए, तभी के तभी वो स्केलेबल होता है। आपको जितना भी एक्सटेंडेड करना है, आपके हार्डवेयर में एक्सटेंड करना है या सॉफ्टवेयर में एक्सटेंड करना है, दोनों चीजें से स्केलेबल होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? डाउट है किसी को? दो रीजंस पता चले क्लाउड का क्यों मार्केटिंग है इतना। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्टर वाइज एप्लीकेशन। In many sectors, cloud is continuously using and their rate is also going to increase. Likewise, in innovations, if you have developed any innovations platform, then their all our data and all the information are stored on cloud. आपने खुद में भी देखा होगा, खुद के मोबाइल में जब फोटोज ज्यादा होते हैं डिलीट करते हो क्या, या क्लाउड पे डाल दो? ड्राइव होगा ना सबके पास, गूगल ड्राइव सुना है? गूगल ड्राइव एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। खुद के मेमोरी में स्टोर ना करते हुए क्लाउड पे डालो, सुना है ना? There are the various sector.
feature customer innovation, advertising, marketing, aerospace, satellite, agriculture, automotive, education. एग्जाम्पल बता सकता है कोई? एजुकेशन में कहाँ यूज हो रहा है या हेल्थ सेक्टर में कहाँ यूज हो रहा है? एनीवन? गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ यूज हो रहा है? सुना होगा ना कहीं क्लाउड यूज हो रहा है ऐसे. डिजी लॉकर. यस, ग्रेट. और कोई ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करो, गलत हुआ तो चलता है, एटलीस्ट ट्राई. एजुकेशन पर्पस के लिए, आई मीन लाइव लेक्चर्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. यस. फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉमन एग्जांपल बैंक्स. सुना है? ओके, नेक्स्ट. There are the various applications, various sectors. Continuously, cloud is we have used in it. Okay, and the biggest sector is healthcare and life science. You know, all of you, during COVID, कहाँ पे स्टोर किया होगा सारा डेटा इतने सारे लोगों का? कोविड में कितने पेशेंट्स थे? तब तो ना शॉप्स ओपन थे, ना ऐसे कोई लिखने के लिए वहां पे बैठा हुआ नहीं था कि फाइल पे फाइल लिख के रख दे, मैन्युअली सारा काम करे. सबसे ज्यादा उस टाइम पे क्लाउड यूज हुआ हुआ है. कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा यूजेस है क्लाउड का. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट, वी हैव डन एनीथिंग बिकॉज दे हैव द बेनिफिट्स. ठीक है, विदाउट बेनिफिट्स तो अपन कोई चीज करते नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी. ओके, सो क्लाउड हैविंग द सम बेनिफिट्स लाइक फास्ट डिप्लॉयमेंट्स. कोई भी चीज की अगर एक्सेस चाहिए होंगी, बस मोबाइल से कमांड डालनी है या वेबसाइट पे जाना है, क्लिक करना है, रिमोटली एक्सेस कर पाते हो कोई भी चीज. ऐसा होता है कि तुमने कोई वेबसाइट सर्च की और वो बस कल आएंगी, आज सर्च की तो सर्वरलेस सारा आपको रिमोटली एक्सेस होता है. ठीक है, लो कॉस्ट, जैसे आपको बोला पे एज यू गो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट 2 दिन के सेल के लिए साल भर का तो उनका रिसोर्स अवेलेबल नहीं करेंगे ना, साल भर के लिए पे नहीं करेंगे. 2 दिन ही अगर उनको काम रहा तो 2 दिन के लिए सर्वर लेंगे और 2 दिन के लिए ही पे करेंगे. सो दिस टर्मिनोलॉजी इज पे एज यू गो. जितने दिन के लिए, जितने टाइम के लिए, जितना यूज कर रहे हो बस उतना ही तुम पे करो. इलास्टिक, आपको एग्जांपल दिया, इफ 100 पीपल्स ऑलरेडी लॉग इन and we have the only storage uses of 100 people, and if 101 people are log in, then instantly we have increased our storage capability. 100 people already log in है और 100 को ऐड करना है तो instantly we have added our storage. Okay, it is scalable, globally accessible. PUBG का एग्जांपल दिया है, इंडिया में रह के भी आप एक्सेस कर पा रहे हो. more secureable and scalable. Okay, next. In cloud sector, there are the various cloud providers in the market. Mostly there are the major cloud providers are 14 in the market, and Amazon is the one of them. Okay, Amazon is the 10 times faster than other 14 competitors. नाम सुने होंगे आपने, Oracle, Alibaba, Google Cloud, Azure Solutions and IBM Cloud. सुने हैं नाम? सुना होगा इतने टाइप के क्लाउड्स है. ये सारे सर्टिफिकेट्स मार्केट में प्रोवाइड है. अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका फ्यूचर करना है, इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग, सो यू कैन गो विथ ऑल दिस 6 और चूज एनी वन. ओके, नेक्स्ट. अभी आपको एग्जांपल बताया कि ऑलरेडी 6 सर्टिफिकेट्स ऑन अ स्क्रीन, बट मैंने बताया कि 14 जो कॉम्पिटिटर मार्केट में है उनसे 10 टाइम फास्टर क्लाउड है. एग्जांपल भी सामने ही है. AWS के ऑलमोस्ट
2000 से प्लस सर्विसेज AWS प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए अभी मार्केट में लीडिंग कर रहा है। बाकी जो क्लाउड्स है उनके सर्विसेज लेस देन 1000 है। जितने ज्यादा सर्विसेज रहेंगे उतना ज्यादा फायदा है और सबसे ज्यादा सिक्योर AWS क्लाउड। सो AWS इज लीडिंग द मार्केट नाउ। क्वार्टरली आपको रेशियो दिख रहा है, I think 32% it is, and Azure is 23%. Azure is a product of Microsoft. Next. Yes. Services that AWS offers. These all the services will be covered during your hands-on practical session. So now we will skip it. Continue. Continue services. Wait. This all the services will be provided by Amazon, and this is the most reputed services providing by the Amazon. We are not listed all the 2000 plus services. We have only listed those services who are maximum times used in a market. Maximum companies use these services. Mostly the company use 10 to 20 services only. Okay, next. This data is older. Now there are the 25 regions and 52 availability zone. In 18 regions there is the India is added in it. अभी AWS का जो डेटा सेंटर है वो इंडिया में भी अवेलेबल है, so it is easy to us to fetch the data from this data center and access any type of data, any sources. Next. Okay. So our college already has a AWS Academy, and our college will provide you some AWS courses. So आपको क्या करना है कि आपके जब प्रैक्टिकल सेशंस वगैरह जब रेगुलर कॉलेज चालू होगा तो आप प्रैक्टिकल सेशंस होंगे क्लाउड के ऊपर, तो आपको कुछ टाइप के AWS Academy की तरफ से आपको मेल्स आएंगे, तो आपको दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी शो टू यू। स्किप। जब आपको मेल्स वगैरह आएंगे तो ये प्रोसेस करनी है, तो उस टाइम पे आपको ये पूरी प्रोसेस बताई जाएंगी कि आपको क्या क्या फॉलो करना है कोर्सेज करने के लिए। नेक्स्ट। ओके। Our college AWS Academy having these types of courses. Likewise, you have to see like AWS Academy Cloud Foundation, AWS Academy Learner Lab, Cloud Architecturing, Cloud Developing, Cloud Operation, Cloud Security. Likewise, there will be a 18 courses added in bucket list. So in 18 courses, you have to only 2 course. आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 2 ही कोर्स अवेलेबल होंगे, जो 2 कोर्स करेगा उसके बाद उसको आगे के 2 कोर्सेज की एक्सेस दी जाएगी, क्योंकि सर्टिफिकेशंस लिमिटेड है और उसके लिए कॉलेज पे कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये फ्री में सबको अवेलेबल नहीं होगा, जो ऑलरेडी उसको वर्क करेगा उसके ऊपर काम करेगा उसको आगे के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ कोर्सेज। और अभी जो सर्विसेज लिस्टेड किए हुए थे पहले, जो आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखा है, all the services are covered in AWS Cloud Architecture and Cloud Operation. कोर्स के हिसाब से वो सारे सर्विसेज रिकॉर्ड हुए हुए, कोर्स के हिसाब से सारे सर्विसेज लिस्टेड हुए, कौन से कोर्स में कौन से सर्विसेज यूज होते हैं। नेक्स्ट। यस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको करियर बनाना है AWS क्लाउड में, तो सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी टू ऑल ऑफ यू। जिसको भी करियर बनाना है, तो पहले एक लेवल रहती है क्लाउड प्रैक्टिशनर करके, फाउंडेशनल लेवल होती है, ठीक है, प्रैक्टिशनर कोर्स में। फाउंडेशनल के बाद आप एसोसिएट लेवल पे जाते हो, एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड स्पेशलिटी। तो जनरली मैक्सिमम जनों के क्या सर्टिफिकेशन रहती है, एसोसिएट लेवल। आपने डायरेक्टली एसोसिएट लेवल कर लिया तो ऐसा होता है कि फाउंडेशनल लेवल आप ऑलरेडी क्लियर हो, तो आपको फाउंडेशनल लेवल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एसोसिएट लेवल का पेपर दे सकते हो, बट यू कैन नॉट गिव द पेपर डायरेक्टली प्रोफेशनल लेवल। क्लियर? आपको अगर पेपर देना है तो आपको पहले एसोसिएट लेवल का पेपर देना पड़ेगा। और AWS एकेडमी की तरफ से आपको जितना हैंड्स ऑन हो सके उतना ट्राई करो, क्योंकि अगर आपने बाहर से एक कोर्स किया या इसकी एग्जाम भी दी, $150 और $250 की उसके कॉस्ट है। दिस इज टू लार्ज। नेक्स्ट। Thank you. And if you have any questions regarding GDSC and AWS cloud, you can ask. Open for the questions.
Any question related GDSC, AWS Cloud?